थोड़ा सा केयरलेस था कंटेस्ट देने में. So at present, I'm a manager at Amazon India on the retail side. The interview process of Amazon is a little bit different because What is the role of competitive programming in grabbing a job, and is it necessary? I got rejected in the Cisco final round interview. रिसेशन के लिए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो एक्स्ट्रा. और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें मैंने देखा कि आर्टिकल्स नहीं है. If you could go back and give advice to your college self, what would be that advice? Everything like happens for a reason. मैं इसी ब्रांच से हूँ, आईटी सेक्टर के लिए तैयारी करनी है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? Good evening, everyone. I am Risha Garg, and on behalf of the Salah family, I would like to welcome you all. For all those who are curious, let me tell you about Salah. Salah is a mentor community that aims to connect present students with the alumni so they can receive guidance about the career they wish to pursue. For bridging the gap between the alumni and the students, Salah organizes various events such as workshops, meet and greet sessions, and other events. For today's online podcast come meet and greet session, we would like to welcome our alumni, Mr. Shukla, who is currently working as a SDE at Amazon and was also an intern at Geeks for Geeks. After the podcast, the audience will be given an opportunity to ask any questions they may have. Please gather all of your questions in advance. For further questioning, I would like to invite Mr. Sathak Tyagi to take over. Thank you, Risha ma'am. Hello, sir. How are you? Yeah, I'm good, Sarthak. So first of all, we are really thankful that you're here, and I'm sure that everyone here would love to know that what inspired you to get involved in Amazon as a SDE. Okay, yeah. Yeah, thanks, Sarthak, for asking that. First of all, like, thanks to the Salah community for organizing this. It was an equally great opportunity for me to interact with you guys. And also, it's like share my experience and know about you guys too. So, thanks for organizing this. So the Okay, now pleasure is coming to your all second ours. question. Yeah. So, coming to your second question, like, what did inspire me? So, firstly, I'll like start with my short introduction. That what do I currently do, and yeah. So, at present, I'm an manager at Amazon India on the retail side. So retail specifies to the merchant side who sell products at Amazon, right? Before that, I was an intern in the same company or of starting Jan 2022 to June 2022. Before that, I also completed internships in a startup known as Conquer IP, and then, as you mentioned, Geek for Geeks. Yeah, so this is my work experience. Now coming to the question, what inspired me to join Amazon? So the first answer, the true answer is the package was quite high compared to other companies. Yeah, and secondly, from the perspective of our own college placements, uh, company like Amazon generally don't visit, right? So for a Yes, sir. person like me or guys like us, product-based companies are very good opportunities, right? Generally, the companies which visit our college are mostly service-based companies. So it was around November 2021 when I received the opportunity for this campus placement for the interns at Amazon. All the rounds went well. After first was the coding round, which also involved aptitude. Then I moved to the interview rounds. One after another, it got cleared, and finally I was selected as an intern. So that was very uh, important scenario for my career start, right? And yeah, motivation point of view, like I was from the second year itself, I was quite interested in data structures, computer science subjects, mathematics. So this helped me pave a way for the product-based companies, right? Also, the work environment, the tech stack which aligns with my personal tech stack preferences. So these are the like basic tech reasons why I chose to go for a product-based company at the start of my career. Okay, sir. So sir, आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली से कोई आईटी सेक्टर में जिसने आपको मोटिवेट किया या गाइड किया इस फील्ड के लिए? मेरे फैमिली से, yeah, my uncle is in IT sector, but he didn't have much of a role in like guiding me because his uh, work life is quite different like compared to software engineer. So he switched from a software engineer to the management side. He's now a VP at Bank of America. He's situated in London. Yeah, so I had connects with him regarding how to approach interviews, but not greatly on the tech side.
just on the managerial purposes and how a good career path can be drawn up in the IT industry. Yeah, that's what our conversation was based on about. But other than him, like no one at present, कोई भी ऐसा IT इंडस्ट्री में नहीं है. डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, सब कोई. Okay, sir. Sir, as everyone know that Amazon is known for its challenging interview process, and Mhm. also you mentioned in your introduction that you went through several rounds. So, sir, can you share some insights of the interview process, how you prepared for it, and how do you succeeded in it? Mhm. Okay, sure. So I'll start with general product based companies interviews and then come to specify Amazon, right? So Sure, generally sir. क्या होता है product based companies में, mostly topics after arrays, after strings, तो वो include करते हैं dynamic programming, trees, graphs, right? तो product based company generally try to focus their interview around these topics. For Amazon specifically, they focus their interview around trees and graphs. Seldomly they try to ask DP or dynamic programming. So I was prepared for the same. The week I got before my first round of interview, I was completely focused on lead code question based on trees and graphs. So I tried to cover different topics. And luckily, one of the topics got repeated in that interview in the form of a manipulated question. So that first round interview मेरे से दोनों ही like tree के question पूछे गए थे और I was luckily able to solve both of them. And I can't name the questions due to confidentiality. But yeah, those were basic tree Yes, sir. questions which were based around the common concepts. So, and also the interview process of Amazon is a little bit different because what I experienced different from the other companies was that the interviewers are quite helpful in letting you solve the question. So if you get stuck at any point or you're not able to understand the question completely, the interviewer step in and then आपको वो हेल्प करते हैं कि आप क्वेश्चंस और क्लियर समझ पाए, टेस्ट केसेस आपको आइडिया लगे कि क्या कैसे है. तो वो बहुत हेल्प करता है जस्ट इंटरव्यू टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस. सो जनरली पैटर्न ये होता है कि दो क्वेश्चंस असाइन होते हैं, आपको दोनों सॉल्व करने होते हैं टू गेट सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड. So there were 3 rounds of interview for me for the internship role. The first 2 rounds were both technical. They both involved 2 DSA questions. Uh, Out of 4 DSA questions, 3 were based on trees, and the fourth one was based on triple partition sort. So yeah, I was luckily able to solve all 4 of them. Apart from this, they also based some time of the second round interview into project. So my project background was based in blockchain. So I had done it pretty well. So I was able to do the interview also. After that, then come the HR round. In HR round, they generally ask managerial questions, which range from how will you manage the team, how will you handle difficult scenarios, and what will be your approach when things don't go right. So these are general questions which generally people have premeditated answers, and that's good. So interview Okay. process यही था मेरा Amazon का. Thank you, sir, for sharing the process. I hope it helps a lot of us here. Sir, Mhm. as getting placed in Amazon is a milestone in one's career or life. But, sir, it is equally said that every coin has two sides. If there is success, Mm, there are some failures. So, sir, yeah, we would love to know that how do you approach failure or setbacks in your career? yeah, yeah. I would like to quote a line from the previous interview experience, which I saw from the Salah portal as well. The HR head from ABS, he said that failure, there is nothing such as failures. They are all experiences, right? So I would like to repeat the same line. There is nothing such as failures. So there are many experiences when someone can get rejected in a very simple or small interview and get selected in a very great or comparatively challenging interview, right? So again, always there's the 30% luck complexity associated with anything you do. So that goes as well. But as the Indian captain says, ex-captain, that control the controllables, right? So you can only control what you can do. Like give your best effort in whatever it is in your hand, right? So specifically that, uh, I gave interview before Amazon. I was also selected for Cisco Ideathon, and in that final interview, so computer networks was not what I was very proud of, or not a subject in which I was very trained in.
So I got rejected in the Cisco final round interview. I was not able to crack it because the questions were based on computer networks and my concepts were not quite clear in that. So that was one failure I received just before Amazon. But luckily I got selected for Amazon interview and I was able to crack it. So the one thing which I learned from this was never give up, right? Because it may happen that your confidence goes very down after you get rejected in a particular interview. So it happens with every one of us, like the best of us. People get rejected. People don't get shortlisted in very easy coding rounds, company rounds, apti rounds. But that doesn't mean that you can't do anything or you get demotivated, right? Immediately you get a rejection, you should learn from it and start preparing for the next one and try to prove yourself that yeah, I am worthy of it, right? So for rejections, I would the only best way to handle is it to prove it wrong by getting selected in the next and keep trying this process, right? So the only my funda for this is never give up, right? Yes, sir. Sir, I'm sure that you have given a life advice to all of us that never give up and keep trying. And Yeah, the competition is among us only. We should try to do our best. yeah, So, definitely. is there if you can share some story जब आपको work में कोई difficulty हुई और आपने उसे कैसे tackle किया? Yeah. So yeah, sure. I have many such experiences. Let me know if I'm going too fast, okay? Okay, sir. हम्म. So जब internship start हुई थी मेरी Amazon में, so I didn't have any idea कि क्या काम मिलेगा, क्या टेक स्टैक्स होंगे, मैं मुझे आता होगा कि नहीं वो टेक स्टैक, मैं सर्वाइव करवाऊंगा करवा पाऊंगा कि नहीं, लाइक अमंग दोज कैंडिडेट्स या दोज पीपल. सो इसका कोई आइडिया नहीं था मुझे. सो एज सून एज आई जॉइन माई इंटर्नशिप, द फर्स्ट पहला काम जो मुझे मिला था वो एंगुलर टेक स्टैक में मिला था. और उसके पहले मैंने एंगुलर रिएक्ट या फ्रंट एंड किसी पे कुछ भी काम नहीं किया था. सो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था. मेरे को फर्स्ट टाइम लगा था कि ये तो होगा ही नहीं मेरे से, क्योंकि टाइम लाइक 1.5 वीक्स दिया था और पूरा एक वेब पेज बनाना था मेरे को, और एंगुलर वगैरह का कोई आइडिया नहीं था मैं. तो मेरे मेंटर थे जो, लाइक इन द इंटर्नशिप इटसेल्फ, उन्होंने ये कहा कि 1.5 वीक्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो उसने, मैं यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, कोड पैकेजेस समझो क्या स्ट्रक्चर है, एफर्ट मारो. एंगुलर की उन्होंने मेरी वीडियोस भेजी, मैंने यूट्यूब पे ट्राई किया, खुद से एंगुलर का प्लेग्राउंड पे ट्राई किया, कोड लिख के हाउ डज इट वर्क समझा, देन ट्राई किया कोड में लिखने का. 1.5 वीक में तो नहीं, बट 2 वीक में मैं आई वॉज एबल टू कम्प्लीट इट. सो दैट वाज वन पॉइंट कि मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि बहुत चैलेंजिंग टास्क है और मेरे से नहीं होगा, बट या 2 वीक बाद वो टास्क हो चुका था. सो ये एक स्टोरी थी. सेकेंडली जब मैं फुल टाइम में गया था, अगेन बैक एंड, कोर हैवी बैक एंड का काम मिला था मेरे को. फिर उसमें भी मेरे को डाउट था कि आई आई वुडंट बी एबल टू डू इट इन दैट पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था वो कैसे करते हैं. पर जिसको कहते हैं हसलिंग, इफ यू कीप हसलिंग यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग. सो जो भी काम मिले तुम्हें, नेवर गिव अप. वही सेम आई वुड लाइक टू रिपीट इट कि हसल करते रहो उस काम के साथ एंड ट्राई टू कंप्लीट. मतलब ये मत करो कि मेरे को ये नहीं आ रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ या स्टक हो गया. टेक हेल्प, रीच आउट टू अदर्स, बट डोंट स्टॉप. तो यही कहूंगा मैं. तो फिर अगर ये फॉलो करते हो, लाइक आई थिंक कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर सकते. ये दो इंसिडेंसेस ऐसे थे लाइक अमेजोन के करियर में, जो मेरे को काफी चैलेंजिंग मोमेंट आए थे, बट आई वाज एबल टू लाइक डिलीवर इट. Sir, I'm sure these stories will help many of us. Mhm. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. सर, व्हाट डज अ डे इन योर करंट रोल लुक लाइक इन Amazon as a SDE? ओके. सो मैं दो कंपैरिजन करूंगा, लाइक वन व्हेन वर्किंग फ्रॉम होम, व्हेन वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, राइट? Yes, sir. सो या, सो अमेजोन लाइक बहुत अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो कि होता है आपका लाइक फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ बैलेंस या फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, राइट? So generally I prefer going late in the noon. So I go around 12:30 morning, like PM. And then comparatively I take breaks around 4:30 after daily meets and all the meets. So after in the breaks, generally 4:30 to 6 around we play like football, table tennis, other games, right? From 6 I again come back, and 6 to around 7:30 I try to complete the rest of the work. Then I go back home, and if there sometimes it happens that we have to complete a meeting
in different regions. So if I have a meeting with a client in Canada or US, so they'll have the different time zones, right? So you'll have to connect at night with them. So if there are any meetings, I attend them, and then like I enjoy my personal time. When working from home, uh, this behavior completely changes. Uh, I can do late night work, but again that is my own personal preference, right? I can do late night work in morning. I can go up late, and in between, if I want to like go step out with my home due to some personal work or anything. So that flexibility I get when I work from home. And this completely depends on your team. What kind of team have you joined? Like what are the work from office days, or how much do they allow you to work from home? So this is also a factor which steps in. But apart from that, the best thing which I like about Amazon is like the flexible work hours. But again, like people think that once you get into the company, things are very easy or go all right. But that is not yet. The second step of challenges start, right? There are very different tasks, very different opportunities which you get in the company, and you'll have to deliver them. So there have been instances I've been working like continuously 2 nights up, and have to deliver the project at any cost. And there are also instances that yeah, I'm quite free in 2 days and I'm able to complete my personal work or something like that. Yeah, so the work life balance is quite ups and downs at Amazon. So my next question was that only, sir. As you mentioned, कि आप Mhm. जब आपको different regions में connect करना होता है, तो आपको night में भी आपको एक conference Yeah, करनी होती है. तो सर work yeah. life balance कैसे manage होता है इतने demanding field में? So इसमें बहुत सारे फैक्टर्स स्टेप इन करते हैं. फर्स्टली है कि करंट सिनेरियो जो है, पीपल आर फोकसिंग मोर ऑन गेटिंग द वर्क डन. कोई भी लाइक ऐसा नहीं चाहता है कि मेरे एंड से कोई भी ऐसा चीज रहे कि मेरे परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है. तो सब लोग अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेल करना चाहते हैं गिवन द करंट सिनेरियो लाइक फायरिंग एंड ले ऑफ्स एंड ऑल, राइट? So this is also a factor which steps in between the work life balance, to be very honest. Now, it also depends on what projects is assigned to you. So in Amazon there are like work principles which we follow. So one of them is ownership. So like I'll give you an example. If I assign you a work, so you can show ownership in that. Like you can schedule meetings, you can directly connect to clients, you can take all the cover ups, all the things which don't go well, all the things which go well, both. So that way you show ownership. So suppose if I've got a client or I've got a project which involves dealing with people in USA or France or different time zones. So I have to show bias there, bias for action there, and go to connect with them, go connect with those clients, take the notes. But again, if I'm working up late night, then again I can take the morning time off, right? Because that explains. So that is one thing which I like suggest you also to follow, like you all guys too. Yes, Like sir. don't We will. limit yourself to like 9 to 6 job, right? You can change or like observe your personal life, how do you work, so you can adjust your work life also accordingly. That is what I would suggest. Yes, sir. सर हम सब Okay. ट्राई करेंगे कि आपके जैसे हम भी मल्टीटास्किंग और अपना टाइम टेबल थोड़ा सा शेड्यूल ठीक करें. हाँ सर बट मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा. हाँ, ओके. हाँ, मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा यू एग्जैक्टली कॉपी लाइक एग्जैक्टली फॉलो व्हाट अदर पर्सन इज फॉलोइंग. तुम्हें अपना खुद एक टाइम प्लान डिफाइन करना होगा विच सूट्स यू. सो वो भी चीज है, वो भी एक फैक्टर है जो तुम्हें माइंड करना होगा. यस सर. Sir, my next question would be, how has your involvement in Amazon shaped your personal growth? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. हाँ, सो जब मैंने स्टार्ट किया था, सो मुझे पर्सनली फील होता था कि लाइक और भी लोग हैं जो कंपनी, बिकॉज पीपल वर फ्रॉम आईआईटीज एनआईटीज और भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से थे. सो दे वर क्वाइट कॉम्पिटिटिव एंड क्वाइट वेल वर्स्ड इन डिफरेंट टेक स्टैक्स कंपेयर टू मी. मैं सिर्फ डीएसए वगैरह या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही करके गया था. तो मेरे को वहाँ फील होता था कि मैं थोड़ा लैग बियॉन्ड कर रहा हूँ. बट पर्सनली उन लोग को देख के या उन लोग के लेवल पे आने के लिए मैं बहुत मेहनत करता था. तो पर्सनली वहाँ बहुत ग्रो किया कंपेयर टू डिफरेंट टेक स्टैक्स. लाइक मैंने फ्रंट एंड सीखा, रिएक्ट सीखी, एंगुलर सीखा विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. सो लर्निंग एबिलिटी एक ये पॉइंट है जो पर्सनली मेरे को बहुत हेल्प किया. Secondly, communication skills. So I was not so confident in communicating before like I joined Amazon. So
कनेक्टिंग टू डिफरेंट क्लाइंट्स, डेली मीट्स में स्टैंड अप करना, स्टैंड अप्स ऑर्गेनाइज करवाना, मीट्स ऑर्गेनाइज करवाना, ये सब फैक्टर्स स्टेप इन किए कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अपग्रेड हुई, राइट। तो ये सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। कंपेरेटिवली कॉलेज लाइफ में टाइम मैनेजमेंट में आई वाज क्वाइट वीक। सब टास्क लेफ्ट आउट हो जाते थे, असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होते थे, और टाइम मैनेज नहीं कर पाता था, स्टडी का, गेम्स का, कुछ भी नहीं। तो अमेजोन में आने के बाद वर्क लाइफ बैलेंस को सेपरेट किया, तो उस वजह से टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंप्रूव हो गया मेरा। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ मेरे को लगता है पर्सनली मैं काफ़ी ग्रो किया हूँ आफ्टर जॉइनिंग दिस कंपनी। Yes, sir. Sir, as you have mentioned in your LinkedIn profile about blockchain development, so can you share some of the projects that you have worked on, or some specific challenges that you have faced in that field? या सो ब्लॉकचेन मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट करा था कॉलेज में, अपने डॉक्टर बीपी शर्मा सर हैं, आई डोंट नो अभी भी हैं कि नहीं, बट उनके थ्रू कनेक्ट किया था मैंने, और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया ब्लॉकचेन समझने में मेरे को। सो अराउंड 20 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे उन्होंने, जिसमें उन्होंने ब्लॉकचेन के बारे में समझाया, बिकॉज ब्लॉकचेन वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम। तो ब्लॉकचेन अभी एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि ब्लॉकचेन होता क्या। ब्लॉकचेन होता है ग्रुप ऑफ लेजर्स या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स विच आर इम्यूटेबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते हो तुम, राइट। सो ये ब्लॉकचेन की बेसिक डेफिनेशन है, टू जस्ट गेट एन आइडिया। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं लाइक बिटकॉइन और इथेरियम एंड दीज ऑल। सो इट वाज सेकंड ईयर जब मैं ब्लॉकचेन स्टार्ट किया, और उनके अंडर में ही मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था। माय प्रोजेक्ट वाज जीएसटी टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन मतलब होता है कि जनरली अपने कंट्री में जो भी टैक्स इवेड होता है, लाइक टैक्स की चोरी जो करते हैं लोग, तो उसको कैसे रोक सकते हैं, या हाउ टू अवॉइड दैट विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन। सो ये था मेरा प्रोजेक्ट। डू यू वांट मी टू गो टू द प्रोजेक्ट डिटेल्स आल्सो, जस्ट द Sir, ओवरव्यू? as you wish, sir, if you want to share. या सो या मैं प्रोजेक्ट ये इन्वॉल्व करता था कि वी यूज टू कलेक्ट दी डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर मर्चेंट, स्टोर देम, और फिर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर कस्टमर उनके साथ कर रहा है तो एक बिल आता था, और उसके सारे टैक्स का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास जाता था, जिससे ये वेरीफाई कर सकते थे कि टैक्स चोरी हुई है कि नहीं हुई है, या टैक्स वो पहुंचा है कि नहीं गवर्नमेंट के पास। सो बेसिकली ये था, और ये बेस्ड था वेब 3 जावास्क्रिप्ट और इथीरियम जावास्क्रिप्ट के पीछे। Okay, sir. Thank you so much, sir. Sir, I'm sure that for the next question, everybody present here would be very excited. Sir, what या advice would you give to the current students who are preparing for the job market, or to enter in your field? या या दैट्स अ वेरी गुड, लाइक करंट सिनेरियो, there are very current scenario very challenging, to be very honest. Very less companies have opened hiring positions or vacancies for students at now, given the current market, and we also don't know when the scenario will completely improve. And also there is nothing we can do about it, like as students or as candidates. What we can do is like keep upskilling ourselves according to the current market. Yeah. So firstly, like from the first year we are taught like there are two major fields. One, you can go in the direction of competitive programming, or one you can go in the direction of web development, or completely different. But that is not the case. You can get skilled in both. Web development is something that you can like learn a new technology, go do a project in that, add that project in your resume, and now you are good enough to get another project done in that particular technology, right? So that is how web development works. Coming to the competitive programming, so competitive programming is one part which is not so necessary, but given that one aspect of it, that is DSA. तो DSA जनरली हम हमें यही बताया जाता है कि बहुत जरूरी है, हर कंपनी के इंटरव्यू राउंड्स या कोडिंग राउंड्स में पूछता ही है, और जो कि सही भी है। तो मैं अभी लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कैंडिडेट्स को तो ये कहूंगा, डीएसए वगैरह जैसे ही आए तो उस पर अपना बेसिक्स और फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग कर लेना, बिकॉज दैट विल हेल्प यू go crack companies in third year and sit in different rounds, complete different rounds. So ये एक चीज है फॉर डीएसए पर्पस। गिवन दैट वेब डेवलपमेंट, सो वेब डेवलपमेंट जनरली इंटरव्यूज में डायरेक्टली नहीं पूछते हैं आपसे, दे आस्क इट थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सो वट एवर प्रोजेक्ट्स आपने ऐड किया हुआ है रेज्यूमे में, उसके बेस पे आपसे वेब डेवलपमेंट का टेक्स्ट टैक्स का क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है मेरा कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे में एडेड है, आपने खुद बनाया है, आपने टीम के साथ बनाया, या एनी हाउ, प्लीज मेक श्योर दैट आपको उसका A to Z सब कुछ आता हो। अ, ऐसा होना चाहिए कि इंटरव्यू जब भी आपके प्रोजेक्ट का पूछ रहा है आपसे, तो आप वहां से इंटरव्यू ड्राइव कर सकें, लाइक यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू आस्क और वट एवर यू टेल।
सो ये एक पाथ है जो अभी के लिए मतलब कहूँगा करंट मार्केट को देखते हुए। एंड ऑल्सो देयर इज टारगेटेड प्रिपरेशन। सो टारगेटेड प्रिपरेशन क्या होती है? सपोज अमेजोन का आपका इंटरव्यू है, तो आपको पता है कि अमेजोन में ट्री ग्राफ्स के अराउंड इंटरव्यू में क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो आप बाकी टॉपिक्स को स्लो डाउन करके ट्री और ग्राफ के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो बिफोर अमेजोन इंटरव्यू। ऐसे ही आपको किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप्स के बारे में पता है कि ये स्टार्टअप इज बेस्ड ऑन रिएक्ट, so you can that time prepare react more efficiently, so that will help you in the interview. So marketplace, current market के placements, I would say targeted preparation is a very good options. Okay, sir. Uh, Sir, apart from these, are there any other skills or competencies that you would suggest students to work on during the college life? ओके, सो टेक स्टैक के अलावा, लाइक टेक स्टैक का मैंने बता दिया कि क्या क्या Yes, sir. पार्ट्स होते हैं जनरली इफ आईटी इंडस्ट्री में आता है। उसके अलावा फर्स्टली इज कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती हैं जब आप एचआर इंटरव्यूज में हो या इवन टेक इंटरव्यूज में भी। इट हैपन, मतलब बहुत ऐसे इंस्टेंस होते हैं कि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन पता है, आपको क्वेश्चन का अप्रोच पता है, बट आप इंटरव्यूअर को या अपने सामने जो भी बैठा है उसको समझा नहीं पा रहे हैं कि व्हाट आई एम थिंकिंग या हाउ विल आई सॉल्व दिस। सो ये होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं रिज्यूमे में। सो वो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हो दैट यू आर क्वाइट एक्सप्रेसिव। आप जो भी सोच रहे हैं या आपके मन में जो भी है, आप क्लियरली सामने वाले को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो कई बार होता है कि टेक्निकली नॉट सो गुड कैंडिडेट्स आल्सो, ड्यू टू विद देयर गुड कम्युनिकेशन या गुड एक्सप्रेसिंग स्किल्स, दे आर एबल टू क्रैक डिफरेंट इंटरव्यूज। सो Okay, sir. ये मैं जरूर बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे सेकेंड ईयर से ही वर्क करने लगो। इवन अपने कॉलेज में लाइक जो सीसीपीडी एंड ऑल डिपार्टमेंट्स हैं वो काफी हेल्प करती हैं इस सब चीज में। तो डोंट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। Yes, sir. एंड ये हो गया। और ऑल्सो लाइक टेक स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे स्टूडेंट जनरली डोंट फोकस, but that is also a criteria when I personally am interviewing a candidate or anyone is interviewing a candidate, because extra curricular skills आपको ये prove करने में help करती हैं कि this man can also take up new task or completely different task what he is doing and get skilled in that and then deliver. So extra curricular पे भी हमेशा से like at least try to follow one hobby, be it sport, be it cricket, be it music, be it book reading, be it good speaker, anything. Okay, sir. Sir, as we all learn in college that networking is very important. So, sir, how important is networking in your industry? And if you can share some tips about effective networking. Yeah. Yeah, you spoke quite right that networking is important from the college life itself. So first of all, I'll start with LinkedIn, right? The most famous or most efficient form of networking. So from the second year, like I would recommend you to go and connect with those people in which you are seeing, like there's a famous question, right? Where do you see yourself after 5 years? So whatever you think of that, I want to be like, I want to go in this company or a company of this type or a product based company, or I want to go in the cyber security field, something like that. Then go and connect with those people, talk to them. There can be many chances that you don't get a reply, but there are many opportunities, there are many number of people who will respond to you or respond to you after some time. So go and connect with them, build a good networking connection with them. So this is for LinkedIn specifically. That will help you to get an idea of how that field works firstly. When required, they'll be also available for referrals or telling you what to improve in your resume, in your CVs, right? So that is one point where LinkedIn helps greatly. It helped me also, and currently I'm on the other side of the coin, so I'm helping others too on that perspective. Apart from them, in college you also get a chance for different meetups. There are different clubs, right? uh, this club is itself an example for that. Like Salah, there is Salah. Yeah, there are Google developer clubs. There are coding clubs. There are many different clubs. So those clubs also help you get an idea of how, like where our seniors are based and what were their experiences. Go connect with them and yeah, develop different bondings. So these are all factors like networking helps in college life. When you join a particular company in IT industry, then the networking plays a bit different load. So you get a good communication in the company itself because you work there, right? But apart from company, again, there are LinkedIn, there are emails, when there are friends, right? So when you pass out from college, your friends may go into different companies. So that helps you very greatly when you are trying to switch for different role. But
But that is one aspect, like as a student, I wouldn't suggest you to think about how to switching companies. Your first target is to get into a company, right? So networking in college is, I think, sufficient for you guys. Okay, sir. Sir, as you mentioned, the clubs of the college. So, sir, how has the club activities Hmm. in the college have helped you to develop your personal and professional growth? Yeah, yeah. So from second year itself, I was involved in two of the clubs. One was LDL, and second was Enigma, and I was quite active in both of them. So for the LDL perspective, it helped me grow in communication because there were different instances in which we had to conduct an event, just like you are conducting this one, right? From the Enigma point of view, it helped me greatly in my tech skills. Also, in the third year and final year, I was the tech president, so I was also conducting different round of interviews, and that also helped me interacting with different people. So one is the skill which improved the most was the communication skill. Apart from that, tech skill improved when we in Enigma particularly we had different contests, we had different events in which we participated, competed with other people, and competed with seniors too, right? So that is one instance which also helped me personally to grow my technical skills. So these were basically two skills which I got. And also networking again. There are seniors in different companies who got everyone from Enigma itself. So that is what also helped me. Yeah. Okay, sir. Sir, my next question would be, sir, as we are connecting today and the current Mhm. students are interacting with the alumni uh, of their respective field of interest. So, sir, how do you feel that current students and the alumni in combining together can contribute to the college community, development of the college community? Yeah, yeah. I think you can form, like, my personal suggestion is you can form different groups. It can be any platform. It can be Slack. It can be Flock. It can be Teams. Any platform, and link a particular group of people to a given mentor, right? A particular set of people. It may be they align with same preferences. Like suppose someone wants to go into a product based company, or wants to go into a cyber security based field. You can go to that particular mentor. The student may reach out anytime and feel free to resolve their doubts, like whatever stage of their career they are stuck in, right? So from first year itself to third year, there are many stages in which students are confused to follow which path, right? But that is the point where a mentor can help them greatly. So I think this method of dividing different set of students among different mentors, this can help, like, personally for the your club or any such organization to grow rapidly. And that is my suggestion. So, sir, next up is Mhm. the rapid fire round, and I hope you are ready. Yeah, yeah, I'm sure. Ready. So the first question would be, uh, did you have any favorite professors or classes in college that inspired you to pursue a career in tech? Yeah. Uh, there's Akhilesh Srivastava sir who taught me DSA. So Do that you is what only indulge in drive me. Go on. do you Go only on. indulge in studies, or do you have fun along with your studies? Yeah, I play cricket, badminton, volleyball, and table tennis. Okay, sir. How will you explain Amazon working culture in 3 words? Yeah, sometimes too hectic, sometimes too easy. Your favorite product or service that Amazon offers? Prime. Sir, it is all of us our favorite. Any other tech giants you would love to work for or with in future? Atlassian. Okay, sir. Did any college club play a role in professional development or networking opportunities? Sorry. Can you go on that again? Uh, did any college club play a role in professional or networking opportunities? Yeah, it played a role in opportunity, but yet I didn't have any different switched any different so not yet. But yeah, there's always an opportunity there. A lesson from college that you have found valuable throughout your career. Yeah, believe in yourself. In one sentence, what does Amazon mean to you? Uh, who started my career? I think basically starting point of my career.
Describe your college life in one sentence. Yeah, fun. Last but not the least, how do you see your college life? Yeah, so college life basically was the best part of my life, to be honest. I wasn't involved too much in academics. I People who know me, they know like I was too much involved in sports, different sports, basically cricket. So yeah, and also friends and the sports life. That was the best part of my college, to be honest. Sir, I think the rapid fire round is over, and I think Okay, if it cool. would be coffee with Karan, you have won the hamper. Thanks. So for the next question, do you have any book, website, or resource recommendation? Those who for those who want to learn more about better positions in Amazon. Yeah, for Amazon specifically, for open position, there is straightforward the jobs portal of Amazon. I would not recommend anyone to go to Telegram channels, go to YouTube channels which post these vacancies. Directly go straight forward to the Amazon job portal. There are filters. Go on that filters, apply your filters, and the list of jobs will come on whichever you are eligible. ये काफी हो एक्स होता है लोग टेलीग्राम चैनल्स पे जाते हैं वहाँ ओपनिंग्स देखते हैं तो आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी गुड मेथड you can list out all the company's website whatever you are targeting and go to directly their job portal you'll get all the details. ओके, थैंक यू सर। सर, अब बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लाइन हम सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, वो हमें मोटिवेट कर जाती है। तो सर, व्हाट इज योर फेवरेट कोट और पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू शेयर? या सो नेवर गिव अप तो नहीं बोलूंगा 3 बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी मीट में सो इसी का डिफरेंट वर्जन है ट्राई एंड टिल यू सक्सीड सो दैट इज व्हाट आई बीन फॉलोइंग ऑल माय लाइफ. यस सर। सर, this is a question which I wanted to ask. Sir, आपने सजेस्ट किया कि आपने बताया भी रैपिड फायर में कि Amazon प्राइम आपकी आपको बेस्ट सर्विस है जो आपको लगता है Amazon प्रोवाइड करता है। तो सर, आपकी कोई हाँ फेवरेट मूवी या फेवरेट सीरीज जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? एक फेवरेट मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन अगर किसी ने देखी हो तो वो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है जस्ट बिकॉज द सिनेमाटोग्राफी उसकी और बहुत अच्छे से स्टोरी लाइन मूव किया हुआ है तो शॉशैंक रिडेम्पशन एक ऐसी मूवी है जो मैं सजेस्ट करूंगा बाकी लोग को भी जिन्होंने नहीं देखी है. ओके सर। Sir, we will definitely watch it. Thank you, sir. Sir, also, is there anything else, any message or suggestion that you would want to share with the audience, particularly the students who are aspiring professionals? या सो एक जनरल स्टेटमेंट लाइक फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के इवन फाइनल ईयर के भी हैं कि ऑलवेज बी हम्बल लाइक तुम्हारे करियर में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे तुम्हें बहुत अचीवमेंट्स आएंगी बहुत रिजेक्शंस आएंगे बट डोंट लेट देम टेक ओवर योरसेल्फ और योर पर्सनैलिटी नेवर लेट देम मेक यू शो ऑफ योर स्किल्स और ऐसा कुछ भी नहीं होने देना है तो तुमको लाइक रिजेक्शंस भी आएंगे तो उसको भी तुम्हें लाइट लेना है और अगले के लिए वर्क करना है अचीवमेंट्स भी आएंगी तो उससे भी तुम्हें बहुत खुश नहीं हो जाना है क्योंकि वो एंड नहीं है वो जस्ट एक पार्ट है तुम्हारी लाइफ का तो कंटिन्यू करना है लाइक कीप हसलिंग और अपना जो भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है ये चीज़ है एक चीज़ मैं सबको सजेस्ट करूंगा इन Okay, जनरल. sir. Yes, sir. Sir, thank you, sir. That was all from my side. This was your host, Sarthak Tyagi. And sir, if you allow, हम कुछ questions audience से अगर ले लें. Yeah, sure. Thanks, Arthak, for all the questions. It was a good session. So the pleasure is all ours, sir. Sir, one question that has come from Mhm. one of the audience member is, uh, how did you land into internship? How did you reach out, and what is the procedure? Okay, so 2022 में Amazon जनरली पूल कैंपस हायरिंग किया था तो AKG काइट वगैरह सब में ही एक ओपन कोडिंग राउंड हुआ था एंड whoever got shortlisted into that coding round वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए थे तो ये प्रोसेस था देन इंटरव्यू के बाद मैंने बताया ये. Sir, one more question is, what is the role of competitive programming in grabbing a job, and is it necessary? पहला आंसर कॉम्पिटिटिव में नॉट नेसेसरी बट अ गुड टू हैव थिंग राइट सो व्हेन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब भी करते हो तो इट मेक श्योर कि तुम डीएसए के स्किल्स में भी इंप्रूव हो जाओ और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बहुत अच्छे से ग्रो करे बट अगेन ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है अगर तुम सिर्फ डीएसए के साथ स्टिक रहना चाहते हो तो दैट्स कम्प्लीटली गुड.
Sir, also one question is, can you share the story about the Geeks for Geeks internship you did? Some of the insights if you Yeah. can share. So geek for geek में मैं एक टेक्निकल कंटेंट राइटिंग इंटर्न था. सो उस पे आर्टिकल्स बहुत ढेर सारे पढ़े मैंने. तो उस पे जनरली देखता था ऑथर्स जनरली स्टूडेंट्स ही होते हैं जो भी आर्टिकल्स लिखते हैं. तो वो मेरे को कि अगर बाकी लोग लिख सकते हैं तो मैं भी लिख सकता हूँ. और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें मैंने देखा कि आर्टिकल्स नहीं है गीक और गीक्स पे और बहुत कम रिसोर्सेज हैं. तो ब्लॉकचेन मेरे को जो भी आता था उस हिसाब से मैंने आर्टिकल तैयार किया एंड देन गीक फॉर गीक में भेजा एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप. So the question is, did you participate in hackathon? How was your experience? या स्मार्ट इंडिया हैकाथन होता है Yes, sir. कॉलेज में. तो उसमें मैंने पार्ट लिया था एंड आई केम सेकंड इन दैट. और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि मेरा फर्स्ट हैकाथन वही था और टीम बॉन्डिंग काफी अच्छी हुई थी और डिफरेंट टेक स्टैक्स के बारे में पता चला था. या गुड एक्सपीरियंस. Sir, one more question which I can see is, can you please share a roadmap according to you for the college students? सो अगेन देखो डिपेंड करता है कि तुम किस फील्ड में स्पेसिफिकली जाना चाहते हो. उस पर भी रोड मैप बहुत ग्रेटली डिपेंड करता है. अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ही दूसरे फील्ड में है तो दूसरे फील्ड का रोड मैप फाइंड करके कोई फायदा नहीं है. बट इन जनरल जो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का रोड मैप देखते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा फर्स्ट ईयर के तो बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने को. एंड सेकेंड ईयर में जैसे डीएससी आता है, डीएससी एक सब्जेक्ट है जिसपे बाकी सब्जेक्ट कंपैरिजन में ज्यादा फोकस करना है और फंडामेंटल्स एकदम क्लियर करना है. क्योंकि ऐसा इंस्टेंस होता है कि सेकेंड ईयर में जो लोग डीएससी सही से नहीं पढ़ते हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आके दोबारा पढ़ना पड़ता है उन्हें जस्ट बिकॉज फॉर सेक ऑफ प्लेसमेंट्स राइट. तो वो नहीं करना. सेकेंड ईयर में डीएससी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि हर कोई कंटेस्ट जरूर देते रहे. कोड फोर्सेस, कोड सेफ, लीड कोड, जीएफजी सब पे कॉन्टेस्ट होते हैं. कोई एक साइड पकड़ के उस पर कॉन्टेस्ट जरूर देते रहे. उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है जो कि प्रैक्टिस में नहीं सीखने को मिलती है. तो Okay, sir. बेसिकली यही रोड मैप फॉलो करना. Thank you, sir. That was all the questions, and I would like to thank you for taking the time and coming for the guidance that you have given to the juniors. And now I would like if Kunal sir has joined for a vote of thanks to Shreyan sir. Good evening to everyone, and thanks Shreyansh and Sarthak. Sarthak, you are a very wonderful host. I just saw the whole session also. And Shreyansh, on the behalf of Salah community, I will like to heartily thanks on the behalf of community to give your valuable time here. So I hope, Yeah, I thank you think, sir. It was so let me introduce Shreyans also. So Shreyans is also a very prominent mentor for Salah. He's also actively participated in the interviews drives of Salah. So it's a very prominent journey, I think, from your campus to corporate. So today's yeah. session is actually motive is the same behind that. So I think there are a lot of questions Sarthak asked on the behalf of audience, but still I want request to Shreyansh and Sarthak. So let's Yeah. give few more minutes to audience to directly live question from the audience to Shreyansh because it's a session motive or it's a meet and greet part. So we want ki Shreyansh to be like meet and greet from the audience also. So I hope in future also we regularly connect and make this wonderful series to be a part of Salad, our community. So Shreyansh, we are very grateful for you have a mentor in our community. So I hope in future also we continue with this part and make a together journey with students, current students, our alumni network and our college organization. So thanks again, thanks from whole community. I hope this session also finds a valuable time for you also. So yeah, Yeah, thanks. yeah, sure. Yeah, thank you sir for leading this event and like organizing this for the students. Yeah, that is a very great job you are doing. So yeah, Sarthak, if you allow, so ask your audience people to meet and greet. Just maintain the part to raise the hand and ask directly question to Shreyansh. So anyone, Yeah, I think. sure. So, yeah. Yes, sir. Any member of the audience who want to interact with Sir Shreyan sir can please raise the hand and speak. Sir, I'm Karthik Sani and I'm in fourth year from CSE AIMA branch. Hi Karthik. और मेरा क्वेश्चन यही था कि मैं अब आगे बैंक के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस हूँ. मेरा डीएसए अभी इतना अच्छा नहीं है. मैं बेसिक जानता हूँ डीएसए के बट मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं है.
ओके, सो तुम्हारे पास एक जॉब ऑफर ऑलरेडी है, सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मेंटली तुम पीस आउट हो सकते हो। और तुम्हारा सिर्फ एक गोल है कि इससे बेटर कंपनीज में जॉब ऑफर क्रैक करना, राइट? सो अगर तुम्हारा गोल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की तरफ है, तो मैं ये कहूँगा कि जितना भी टाइम है, अगेन कॉन्टेस्ट देना, और जितने भी शीट्स होती हैं, लाइक तेरा लव बब्बर शीट्स और डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स की शीट्स हैं, तो इसमें ऑर्गेनाइज डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस कवर्ड हैं। तो अभी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये फॉलो करो, और ये तुम्हें बहुत ग्रेटली इंप्रूव करेगी डीएसए स्किल्स इंप्रूव करने में। वंस वो हो जाता है, देन आई थिंक कोडिंग राउंड्स और ये सब राउंड बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे तुम। थैंक यू। हेलो सर। हेलो भाई। सर, my name is Vaibhav Gupta. I am from CSGS branch first year. सर माय क्वेश्चन जी। मतलब मेरा ये डाउट था कि काफ़ी सारे मतलब हम्म। मैंने पूछा सर से, काफ़ी सीनियर से पूछा, तो वो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर में काफ़ी टाइम मिलता है, यू कैन एंजॉय और जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो। बट मेरा ये था कि अगर जैसे हम लोग को टाइम दिया जा रहा है तो हम लोग अगर डेवलपमेंट या फिर डीएसए पे अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग का एक छोटी सी लीड होगी, तो वो करना सही रहेगा, या फिर अगर करना भी है तो फिर डीएसए करें कि डेवलपमेंट, या फिर जो भी ब्रांच आप बताओ, कोई भी फील्ड हो, ठीक है, उस फील्ड में कौन सा तो करना दो चाहिए? पार्ट हैं। जिन्होंने कहा एंजॉय करने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ काम ही करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, तो उससे तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत असर पड़ता है। तो एंजॉय भी जरूरी है, बाकी चीज में भी पार्टिसिपेट करो। और डीएसए और वेब डेव क्या फॉलो करना है इन दोनों में, ये मेरा डिसीजन नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा, राइट? अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आता है, यू लाइक कि कैसे सर्वलेस चीजें वर्क करती हैं, कैसे यूआई पे डिस्प्ले होता है, या कैसे बैकएंड से मैनेज होता है, तो तुम वेब डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, राइट? अगर तुम्हें इंटरेस्ट आता है लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या मैथमेटिक्स में, तो तुम डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्टार्ट कर सकते हो सीखना। दोनों के लिए आई थिंक मोर देन एनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जीएफजी पे, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो ये डिसाइड करना है कि किस लाइन में जाना है, ये तुमको डिसाइड करोगे। ये आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हारे लिए ले सकता हूँ डिसीजन। थैंक यू सर, यही था मेरा डाउट। थैंक यू। हेलो श्रेयांश सर, मेरा नाम हर्ष कुमार है, मैं सीएस ब्रांच से हूँ, फर्स्ट ईयर। हेलो भाई। सर मेरा मेरा डाउट ये है कि जैसे मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मतलब अभी बहुत सुन रहा हूँ कि रिसेशन वगैरह आ रहा है, इतनी जॉब्स नहीं बाकी है, तो मतलब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो फोर्थ ईयर के बाद मैं थोड़ा मतलब बेटर रैंक पे सोचूं खुद को, या बेटर पोजीशन पे देखूं, तो कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इंक्रीज होते जा रही है, चैट जीपीटी वगैरह के बाद। रिसेशन के लिए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो एक्स्ट्रा, वो तुम्हारे हाथ में है नहीं वर्ल्ड की इकोनॉमी। तुम अपने एंड से बस अपस्किल कर सकते हो, अपने स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, कि जब भी टाइम आए तो तुम फुल्ली रेडी रहो। जब भी डीएसए पूछा जाए तो तुम उसमें अच्छे से रेडी हो, या वेब डेवलपमेंट पूछा जाए तो तुम उसमें फुल रेडी हो। जब भी तुम्हारा टाइम आए, तो तुम्हारे पास 4 साल है ये मेंश्योर करने के लिए कि जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हो उसमें मैं एकदम पूरी तरह से अपस्किल्ड हूँ, राइट? इकोनॉमी और रिसेशन के लिए तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो। Sir, I am Tashvi from CSEDS second year. हाय So I ताशवी। would like to ask you if you could go back and give advice to your college self about anything like you want to change or give advice to yourself, what would be that advice? गुड क्वेश्चन। कुछ चेंज तो नहीं करना चाहूंगा पर्सनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी होता है लाइक रिजेक्शंस भी या कोई भी चीज़, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। कुछ चेंज करते तो आई डोंट थिंक कि, क्या पता अगर वो चेंज हो जाए तो मैं यहाँ नहीं होता जहाँ हूँ मैं आज। सो आई डोंट थिंक कि मैं कुछ चेंज करना चाहूंगा। एवरीथिंग लाइक हैपेंस फॉर अ रीजन, मैं वो फॉलो करता हूँ। सो Sir, any advice to enhance your current situation on or something like that? एक एडवाइस ये रखूंगा कि मैं थोड़ा सा केयरलेस था कंटेस्ट देने में। मैं कंटेस्ट देता था बट रिविजिट नहीं करता था, जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते थे। और एक कॉमन टर्म होता है अब सॉल्विंग। सो अब सॉल्विंग क्या होता है कि तुम कंटेस्ट देते हो, उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं उनको दोबारा अटेम्प्ट करते हो, उनका मतलब समझते हो कैसे सॉल्व होते हैं, तो यू गेट लर्निंग। सो वो मैं इनिशियली अपने करियर में नहीं करता था, वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आई थिंक यू मस्ट फॉलो। Thank you so much, sir. We would surely take this under our consideration. हेलो। गुड इवनिंग सर, मैं आई एम ओम पांडे फ्रॉम ईसीबी फर्स्ट ईयर।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ईसी ब्रांच से हूँ एंड आई वांट टू मुझे आईटी ब्रांच आईटी सेक्टर के लिए तैयारी करनी है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? ओके, सो एग्जैक्टली सब्जेक्ट तो नहीं पता, बट ये मेरे को श्योर हूँ कि इसी ब्रांच के भी कुछ सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे कॉलेज से आकाश सर थे। आई डोंट नो कौन कितने लोग जानते हैं उनके बारे में। ही इज करेंटली इन शेयर चैट। और कॉलेज टाइम से उन्होंने अपना स्टार्टअप लाइक इनोस्क्रिप्ट स्टार्टअप भी किया था और वेब डेव के अराउंड बेस्ड था। तो वो इसी के होते हुए भी फर्स्ट ईयर के थ्रू ही वेब डेवलपमेंट को फॉलो करते थे अलॉन्ग विद देयर एकेडमिक सब्जेक्ट्स। सो आई थिंक इफ यू हैव द प्रॉपर मोटिवेशन along with academics, you can manage the extra tech stack or skills required for the IT industry. So I think ये हो सकता है बहुत easily. And EC, I think quite a few people from EC are in IT industry from our college. Thank you, sir. It was a pleasure interacting with you, and thank you for giving us your valuable time. And also, thank you to the audience. You have been really patient and a great audience. Thank you so much. Thank you, sir. Yeah, thanks Arthur. Thanks everyone. Bye bye.